So we were doing business letters. So in our previous lecture, we had already done letter for placing order. So now it's time to start complaint letters. So just open your copies and pens must be with you. Note down the topic, students. So topic for today is you are Amit staying at 81 Chitranjan Park, New Delhi. So you have to look at the topic first. I'm looking at the pinpoints of topic only. It is your moral responsibility to note down the topic. Topic is your Amit staying at 81. Address is 81 Chitranjan Park, New Delhi. If we look at the elaboration of the topic, last month you got an inverter installed at your house through electronical word of Lajpat Nagar, New Delhi. You have purchased inverter last month and the name of shop is electronical word Lajpat Nagar, New Delhi. I'll elaborate the topic again. Now you find that the inverter is not working. Down the topic, now you find that the inverter is not working and the local electrician who examined it at your request has told you that it is having some technical defect. Write a letter to the dealer asking him to replace it immediately under terms and conditions of the deal. So I think you are crystal clear about the topic. So just look at the way to write complaint letter. Is also considered as business letter. So ये हम जो complaint कर रहे हैं, that is to the product we have purchased. तो हमने inverter purchase किया, यानी हम means अमित ने. Last month it was purchased, and that was not working properly. So complaint letter, complaint to the dealer against that particular product. I think about the topic you are crystal clear. तो बेटा ऑर्डर मत भूलना CODER. जब भी हमने कुछ भी इलेबोरेशन करना है किसी भी राइटिंग पीस का, यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑर्डर. आई थिंक you are able to understand what is order. Order is, if we look at this word C, so you have to look at the very systematic way. We have to just look at this particular point in a very systematic way. So we have to collect the ideas. जो हमें C means collect the ideas. जो हमने जो भी टॉपिक है उसके अकॉर्डिंगली जो रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली we have to just collect the ideas. Then O is the moral responsibility to organize the collection of our ideas or thoughts about the topic, and D means rough drafting.
After drafting, it is a moral responsibility to edit. Then we have to rewrite, redraft or rewrite. So this very fine system, the concept to write any writing piece. So I think you are crystal clear so far as order is concerned. So हमें how to look at. So you have to look at language logic. उसके लिए क्या होगा? You should be very clear about the base. That's the format of business letter. तो अब हमें start करना है. Let us start. So now you have to write with me. तो मैं लिख रही हूँ write. पहले self address 81 चिल्ड्रन पार्क must be covered in 2 lines. Yeah, I think this address belongs to the person who is just making complaint. Now just look at the thing. Now next step is to write a date. Never write DATE. No need of writing that. Directly you have to write the date after living one. So suppose today is September 202. Next step is after leaving single line, we have to look at the address of receiver, जिनको हम लेटर डाल रहे हैं, जिनको ये कंप्लेंट भेज रहे हैं, उनका एड्रेस. So we have to just look at sales manager. It must be covered in 3 lines. So now just look at electrical work. Electrical work. Now look at the next step, New Delhi. I think you are crystal clear so far as this particular step is concerned. So now the next step is after leaving single line, you have to look at subject. We look at the subject. Subject is replacement of inverter. So beta O should be small, R should be capital and I should be capital. So I have already told you people that subject must be in maximum 4 to 5 words and first letter of each and every word should be in capital with the exception of preposition, conjunction, article. So I think crystal clear up to this particular point. Now just leave one, then sir. तो हमें ऑलरेडी मैंने बताया था कि हमें कोई भी अगर बिजनेस लेटर लिखना है, moral responsibility to look at 3 paragraphs. तो हमें 3 पैराग्राफ्स बनाने ही बनाने हैं. एक पैराग्राफ में कभी भी हमें कंप्लीट नहीं करना जो हमारा कंटेंट होगा, जो बॉडी होगा लेटर का. तो यू हैव टू लुक एट कि कैसे ये डेमोन्स्ट्रेशन के बाद यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. अब फर्स्ट पैराग्राफ मैंने ऑलरेडी बताया था बेटा कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है. अब इस लेटर की क्या इंट्रोडक्शन होगी? यू हैव टू लुक एट. So you have to highlight the basic point. What basic point you have to highlight? Look at this particular point. हमें start करना है. It was only last month comma, you have to highlight the date. Was 18 August.
then 2020. Then I have bought GOUGHT an inverter then full stop. The model is, you have to highlight the model, SM hyphen 567 hyphen C. You will have to highlight the model of that particular inverter, then invoice number. You can look at any 1679 I have written. तो आपको ये इंट्रोडक्शन आपने दे दिया कि मैंने लास्ट मंथ परचेज किया था इन्वर्टर और ये इसका मॉडल ये है और इनवॉइस नंबर ये है. तो यू हैव टू हाईलाइट द नेक्स्ट पैराग्राफ. अब देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में हमें क्या हाईलाइट करना है. कोई भी कंप्लेंट लेटर आती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, यू हैव टू follow the same system. So dear students, understand the concept. So just look at how to write. What should be written that can be taken into consideration at the second stage. First of all, you have to look at how to write. How to write business letter. How to write complaint letter. So now just look at the second paragraph. First paragraph clear हो चुका होगा कि that will be used and utilized for writing each and every complaint letter. Now just look at. So second में we have to highlight the details. जो हमारा second paragraph होगा, we have to highlight the details of our problem. तो हमें highlight करना है last week it started giving trouble. तो आपको पहले हाईलाइट करना है कि कब से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है और क्या प्रॉब्लम है आपको हाईलाइट करना है. तो यू हैव टू हाईलाइट दैट इनिशियली fans and lights would use to run or move comfortably for 7 to 8 hours. आपने हाईलाइट करना है कि जब हमने नया नया परचेज किया था, जब लाइट जाती थी तो 7 8 लाइट्स होती थी और फैंस होते थे, they used to work. अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, then you have to highlight the problem कि these days you have to highlight it fails to make up even for 2 to 3 hours. You have to highlight this particular point कि जब purchase किया था तो things were in a very different order. Right now the things are not in comfortable zone. So you have to highlight the thing. So इसको and this particular paragraph, that is second paragraph, you should be strictly formal while you are in business. Maybe order, maybe complaint. To the point, अब हमें end करना है इस point का, we have to end. तो कैसे करेंगे इसकी ending, क्योंकि हमने problem highlight कर दी है. So you have to look at
दिस पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि टॉपिक में लिखा है कि तुमने लोकल इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था एग्जामिन करने के लिए, तो यू हैव टू हाईलाइट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. द लोकल electrician was called to examine it. He has highlighted that a technical flaw is the basic cause of this trouble. So I think second paragraph is over with that. Now look at the last paragraph. If we look at the last paragraph, you will have to look at the things in very different order. तो उसमें हमें हाईलाइट करना है कि हम क्या चाहते हैं उस कंप्लेंट के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए. यू हैव टू हाईलाइट. तो आपको हाईलाइट क्या करना है? यू हैव टू हाईलाइट इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे that since the inverter is within the guarantee period, so you are requested to replace the set as early as possible. आपको नेक्स्ट में हाईलाइट करना है कि इट इज अंडर गारंटी पीरियड, तो ऑटोमेटिकली must be replaced immediately, and you will have to end that particular letter in a very different way. So please arrange new set as early as possible. Then you have to end this letter. Yours faithfully, Amit. Then signature should be there. I think, dear students, you are crystal clear so far as complaint letter is concerned. This particular demonstration makes you to write as many complaint letters as you like. But follow the concept, follow the order, follow the system. Now look at the next topic for today, that is editing. In your exams, that will be of 4 marks. So I think you are well versed so far as this particular topic is concerned. आपको इस टॉपिक की प्रॉपर वे से जानकारी है, because it was part of your curriculum in 9th also and 10th also. Now we have to look at the general concept, general tricks to do this particular question or topic. तो बेटा कुछ इसके भी ट्रिक्स और टिप्स होते हैं. कोई भी इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है या किसी भी सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, ट्रिक्स एंड टिप्स आर देयर. तो एडिटिंग के क्या ट्रिक्स और टिप्स होते हैं, यू हैव टू लुक एट, नोट डाउन ईच एंड एवरी ट्रिक एंड tip. You will not get any of it in any book. So just be clear about this particular point कि आपको नोट करना है, so that the things should be forever with you. और just look at the thing. Editing क्या होता है? पहले तो आपको particular topics कि you are just look at, you have to look at the passage, that's the part of your grammar portion. Then there is mistake in each and every line. You will have to edit each and every line in a very systematic way. So I think crystal clear up to this particular point. तो हमें पैसेज दिया जाता है, ये सीबीएसई का जो एक करिकुलम का पार्ट है, इज पार्ट ऑफ 11th standards curriculum also. So just look at, I think about the topic your crystal clear passage होता है, उसकी एडिटिंग करना होता है, हर लाइन में मिस्टेक होता है. Now you have to look at the thing in a very systematic way. Our tricks and tips. First,
important. That is, read all sentences. पैसेज में जितने भी sentences होंगे, it is our moral responsibility to read all. What we do? We just look at the line 1, line 2, line 3, line 4, और line तो हम नहीं पैसे की सबसे क्या होता है, ट्रिक क्या होता है, अगर हमें सक्सेसफुली होता है to read all sentences. Very systematic way. Is very important. So second step, यानी कि after reading what you have to do, recognize the tense. हमें सेकंड स्टेप में देखना है कि टेंस क्या है इस पैसेज का. तो ऑटोमेटिकली यू आर क्रिस्टल क्लियर कि हमें सेकंड स्टेप में टेंस की जानकारी होना चाहिए कि ये जो पैसेज है, जो भी प्रिस्क्राइब्ड पैसेज है आपके टेस्ट में, पेपर में, एग्जाम में, तो किस टेंस को हाईलाइट करना है, उसकी रिकॉग्निशन जो होता है बेटा, वो सेकंड स्टेप. So now third step is you will find error in each and every point. तो अब हमारी थर्ड ट्रिक ये होता है प्रेजेंटेशन कैसे किया जाए. प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरी लाइन लिखने लग जाते हैं. कुछ बच्चे जो होते हैं वो अटेम्प्टेशन प्रॉपर वे से नहीं करते. प्रेजेंटेशन होता है हाउ टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो you have to look at, you have to write the number. Number must be same as prescribed in your question paper. उस क्वेश्चन के टॉपिक में जो भी उसके नंबर होगा उसको हाईलाइट करके, सपोज क्वेश्चन नंबर 5 is there, then you have to look at सब पार्ट A, B, C, D. तो आपको क्या करना है, you will have to look at the things in a very systematic way. यहाँ आपको प्रेजेंटेशन देना है, यानी आपको you have to highlight incorrect word first, then correction. तो यहाँ टिक करना है, इसको क्रॉस करना है. So you have to attempt. Presentation is very very important, dear students. Otherwise, even if you are able to recognize each and every part in a very systematic way, you can never attract your examiner. एग्जामिनर तुम्हें मार्क्स नहीं देंगे अगर आप उसको अटेम्प्टेशन आपकी अच्छे तरीके से नहीं होगा. Look at the next step. तो एरर्स यूजुअली किस कौन से होते हैं, हमें एडिटिंग करनी होती है. नंबर ऑफ एरर्स वी आर एबल टू लुक एट द थिंग्स. टेंसेस में होती है प्रॉब्लम, प्रीपोजिशंस में होती है, आर्टिकल्स में होती है प्रॉब्लम, डिटर्मिनेशंस में. तो एरर्स को सर्च करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? आई थिंक यू आर एबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेरी. तो बेटा उसको सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बेसिक्स. Basics means basic concept should be very clear. वो clarification कब होगी? After the lecture of your teachers. It's your moral responsibility to revise and re-revise, dear students. तो अब क्या करना है हमें? देखिए हमें एरर्स पता चल गया कि इस टॉपिक में प्रॉब्लम होगी. So then we have to look at logic plus language. Two steps को हमें ख्याल रखना है, logic plus language. Language you are able to look at the things. You are the masters of the language if you are studying properly. Or logic means basic concept should be crystal clear in
then you can only be able to look at this particular question in a very systematic way. So it was general. Let us move for the main tricks. फिर जनरल था ना, जो हम गलतियां कहाँ करते हैं, we have to look at this कि कैसे हमें उन गलतियों को गुड बाय बोलना है, how to say goodbye to the errors we usually do. So you have to look at first. If I want to look at this articles, I think you are very clear about this topic. Say a indefinite article, an indefinite article, the definite article. So क्या होता है? कॉमन नाउन्स, सिंगुलर कॉमन नाउन्स. क्लियर पिक है हमारी. ये अगर सिंगुलर कॉमन नाउन होता है, वी हैव टू लुक एट एन. एन वी हैव टू लुक एट ए आई ओ यू. ए आई ओ यू साउंड बेस्ड हमें देखना. वी हैव टू लुक एट समथिंग. फॉर एग्जांपल एम ए, तो ए की आवाज दे रहा है एन एम ए, एन एम एल ए. ऑनेस्ट, तो एन ऑनेस्ट. I think crystal clear of this, because English is entirely sound based. तो हमें उस इसको नहीं देखना कि ये अल्फाबेट कौन सा है जो हमारा फर्स्ट अल्फाबेट है किसी भी वर्ड का. हमें देखना है कि उसका जो साउंड क्या है. जैसे एम, ए की वर्ड, ऑनेस्ट, जैसे एच वर्ड है यहाँ पे, लेकिन यू हैव टू लुक एट दिस, दैट रिमेन्स कंप्लीटली साइलेंट. So you have to look at this particular concept. So the, I think, definite article used for important things, important posts. I think crystal clear up to this particular point. So अब हमें I think article का जो basic tip है, you are crystal clear. फिर भी एक example दे रही हूँ. I'm just highlighting one example. Okay, for example, I saw a boy. I saw a boy. A boy was eating an apple. तो बेटा इसमें देखिए, अब ये ठीक है, I saw a boy because common noun, singular common noun. Boy is a singular common noun, so that is why I is inserted here. So now just look at the fault और जो error lies over here. कहाँ मिस्टेक है? A boy. दोबारा जो a boy हाईलाइट क्या है? बेसिक मिस्टेक. तो क्यों? तो have to look at the concept. तो आपको क्या हाईलाइट करना है कि अगर अ से कोई भी आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, सिंगुलर कॉमन नाउन और उसमें अ आर्टिकल होता है, जब उसी सब्जेक्ट की रेपिटेशन होता है, उसका नेक्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में द, यानी अ विल बी कन्वर्टेड इनटू द. So you have to look at the thing. So right point will be the boy was eating an apple. Otherwise वैसे तो यहाँ pronoun होना चाहिए था, पर in order to highlight this particular point, कि while you compose any paragraph, any question, it's your moral responsibility to just look at this particular point. A will be converted into the if repetition will be there, the same subject. I think crystal clear up to this particular point. Now next, we look at the next point. Second, जो हम error करते हैं commonly, you have to look at. हम recognize नहीं कर पाते, you have to just recognize that particular fact. तो अब हमारा second है,
एक 100% हमें ये श्योरिटी होनी चाहिए। सेकंड टिप ये है, टू अगर होता है, टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय V1। आई वॉन्टेड टू सिंग, जहां भी टू होता है उसके बाद जो वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। So you should be crystal clear about this tip or trick if you want to just look at your accuracy level. So now third trick or tip, third is you have to look at everyone, someone, nobody, everybody, so all these words, everyone, someone, nobody, everybody, you have to look at single. तो सिंगुलर मानना है, इसके लिए सिंगल मतलब यू हैव टू लुक एट इज, एफ आर अगर होता है तो यू हैव टू लुक एट इज, वाज वर होता है तो वाज एज कंसीडर्ड सिंगुलर। ये अगर सब्जेक्ट के रूप में कहीं पे भी होते हैं, चाहे वो एवरीवन हो, चाहे वो समवन हो, चाहे वो नोबडी हो, चाहे वो एवरीबडी हो, तो हमें ब्लाइंडली इस बात का पता होना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट का, कि इसके साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी इंसर्टेड। तो जैसे मैंने बोला एवरीवन इज, अगर पास्ट में एवरीवन वाज, समवन इज, so you are crystal clear so far as third tip is concerned. Now look at the fourth tip. 100% sure that you are noting down each and every point. तो बेटा आगे चलिए, you have to look at the next trick or tip in a very systematic way. If two verbs in two subjects express one idea, अगर दो सब्जेक्ट एक्सप्रेस करते हैं सिंगल आइडिया को, तो क्या करते हैं, व्हाट वी हैव टू डू, तो वी हैव टू लुक एट सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जांपल, टू एंड टू मेक फोर। मेक्स नहीं आएगा यहाँ पे, देखिए एक सब्जेक्ट टू ये है, एंड के साथ दूसरा सब्जेक्ट टू हो गया, इट इज देयर, लेकिन ये सिंगल आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ हमें एस और एस लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इज कंसीडर्ड एज प्लूरल। ये दो सब्जेक्ट जो है सिंगल आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं, so that is why we have to look at this particular point. Now just look at, so next step is, अगर नाउन फ्रेज होता है, you have to look at one of, क्या करना है हमें, what we have to do, one of, जहां भी आपका ये नाउन फ्रेज होता है, अगर क्या one of the students of class 11 arts is very intelligent, तो वन ऑफ, इस वन को नहीं देखना हमें कि चलो वन है तो स्टूडेंट लगा दे, नो, एस विल बी, इसका मतलब जितने भी क्लास 11 आर्ट्स में स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक बच्चा, तो वन ऑफ द इज ऑलवेज फॉलोड बाय plural. You have to look at this particular point. Now just look at
The next, if two subjects are joined by as well as, नेक्स्ट टिप को नोट कर लीजिए, अगर दो सब्जेक्ट की ज्वाइनिंग होती है एज वेल एज के साथ, तो क्या होता है, यू हैव टू लुक एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट दैट द वर्ब एग्रीज विद फर्स्ट सब्जेक्ट। अगर दो सब्जेक्ट की ज्वाइनिंग हुई होती है एज वेल एज के साथ, जो वर्ब है क्या किसको फॉलो करता है, तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट को कंसीडर करता है, सेकंड को नहीं। एग्जांपल, ही इज हार्ड वर्क। अब देखिए इसको, ही एज वेल एज, दो सब्जेक्ट्स जो है देखिए एज वेल एज से ज्वाइन हुए हुए हिज क्लासमेट्स, तो हमें फर्स्ट सब्जेक्ट को कंसीडर करना है, तो यहाँ इज आएगा, आर क्लासमेट्स को नहीं देखा जाएगा। तो यू शुड बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट आपके पास होंगे बेटा, तो आप कभी भी इसमें मिस्टेक नहीं कर सकते, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं होंगे और टेक्निक नहीं होगा, so you can never ever be able to make editing anyway. So now next step is you have to look at the next step. So collective noun होता है basically. So it is always highlighted with singular verb. For example, 11th commerce is a very fine class. तो यू हैव टू हाईलाइट, हमें ये ग्रुप के फॉर्म में है, कलेक्टिव माना गया है क्योंकि कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस पर्टिकुलर क्लास, so it is always followed by is. I think crystal clear. So I think you are crystal clear about a number of tips and tricks to look at this particular topic. So it is your moral responsibility to make